means of power transmission. ठीक है जी. So what we are going to do is we are going to talk about ropes today. Now, um, if you look at ropes, ropes are basically made of wires. We take wires and twist them together to make a strand. ठीक है जी. And then we take that strand बल्कि strands, multiple strands like wires, and again twist them together to make a rope. Uh, what I mean is कि हम क्या करते हैं कि we take some wires. ठीक है. For example, these are some wires and we twist these wires together. ठीक है. So this will make a strand. Okay, these are wires, right? And then this is a strand. Now we take more of these strands that we make from these wires and now twist these strands together in such a way that we have a rope. Also, there is something at the center, ठीक है जी, along around which we twist these, and that is called the core. ठीक है. So we have a core, then we have wires, and when we twist these wires we make strands out of them, wires to strands, and then strands to ropes. Okay. Now there are two types mainly of ropes that we make. Those are known as regular lay Now, what is a regular lay rope? Is that you take wires and they are twisted in a certain direction. ठीक है. And then to make strands. ठीक है. And then you take these strands and then these strands are twisted in the opposite direction.
For example, if you twist wires in this direction and make strands, then you will take these multiple strands and twist them in this direction to make a rope. And this is regular because this is regularly because if you twist wires in one direction, they will have the tendency to twist in the opposite direction, and that is why we call these regular lay. ठीक है जी? Now regular lay जो ropes हैं, these are frequently used. Similarly, the other one is also frequently used. um, and we will talk about those. कि आपका जो दूसरा ले है इन लैंग ले या लैंग ले, इसको हम कहते हैं, what we do is we take ropes, wires, twist them in a certain direction, and to strands, बल्कि to strands, and then twist the strands in the same direction. And these will make laying lay ropes. ठीक है जी? Now, this is something that you are going out of the natural tendency of the you know the strands, because they would want to twist in the other direction, and you are forcing them to twist against each other in the opposite direction. But these kinds of ropes, they are good for fatigue application. Yeah, balki they are good for dynamic applications, because the wires do not abrade each other. They kind of are separated from each other and would not work against each other. If you look over here, this figure shows you a rope. यहाँ पे, if we look over here, uh, what I'm going to do is highlight it. ये जो आपको नजर आ रही है, this is a rope. Okay, now this ropes जो है, these are standard ropes. Ropes are available in standards. Now, what is this rope? देखिए, if you look over here, these are the strands. ये आप देखें, this is a strand. Similarly, this is a strand. So, how many strands do we have in here? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, number of strands is 6. ठीक है जी? अच्छा, अब आप देखिए, in each strand, how many wires do we have? So let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the number of wires in each strand is 7. Therefore, this rope is known as a 6 by 7 rope. This is how we represent a rope. ठीक है, यानी इस रोप को हम क्या कहेंगे? This is a section of a 6 by
seven rope, because there are seven wires in each in the strands, and then there are six strands in the rope. ये जो दिखाई दे रहा है इनसाइड, दिस इज नोन एज द कोर. ठीक है जी. Now, अगर हम देखें तो what are the stresses that we can have in a rope. देखें, generally rope would go, let's just think about this, कि एक rope है that goes around a shoe, ड्रम या शिव है कोई. ठीक है जी. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस होंगे? कैन समवन टेल मी? Torsional, sir. एक सेकंड. Bending. जी. What will be the stresses? Let's say if there is load F. Ji. What will be the stresses? What will be the dominant stresses? Okay, there are, if we look over here, there are going to be three types of dominant stresses. Okay, and those three types will be: number one, the direct stress, which is, stretching this rope. ये होगा ना. ठीक है. तो एक तो वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आप इसको कह दें, जो भी है, दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है. What is going to be the second one? Second, दूसरा कौन सा डोमिनेंट? Bending stress. Torsional. Very good. There is going to be bending stress. ठीक है. So what is bending? Bending, देखिए यहाँ पे it is going to bend. ठीक है. And that bending stress is also dominant. Number three, जो है, there is going to be a stress between the interface of the drum and the rope. So there is going to be contact stresses. शेयर नहीं हुआ सर जी. एक सेकेंड. शेयर इस वजह से होगा. Okay. So contact stress, or we can call that Bearing. bearing stress. ठीक है. So these are the dominant stresses in this rope. Now, can we calculate these? Ji, can we calculate these? You already know from your bending की अगर हम बात करें, ठीक है जी. You already know कि m is equal to sigma I over C. Yeah, sigma is equal to mc over I. So this is from that equation. And also, you know कि m is equal to ei over rho के बराबर होगा. ठीक है जी. अगर आप, ठीक है जी. So एंड सिग्मा, इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू ई सी ओवर रो होगा. ठीक है जी. वेयर सी इज क्या, डी अगर इसका डायामीटर है. ठीक है जी. तो दैट विल बी डी डब्ल्यू बाई टू. अगर हम ईच वायर की बात करें, वेयर डी डब्ल्यू इज द डायामीटर ऑफ द वायर, सो हाफ ऑफ दैट which is the radius, and that is dw over 2. तो we can write कि हमारा जो सिग्मा है, that will be equal to ER. What is ER? What is E?
E is the elastic modulus. So remember this equation, elastic modulus of the rope. ठीक है जी. And dw is the diameter of wire, and this d is the dia of the shoe, the drum. ठीक है, ये आपका कैपिटल डी जो है ये यहाँ से यहाँ तक. So remember this equation, that if you want to calculate the bending stress in a rope, this is going to be the bending stress um, in the rope. ठीक है जी. अच्छा, now uh, as I said that wire ropes are available in standards. ठीक है जी. And if you look at the applications of ropes, we use them for different purposes, such as haulage. Um, we also use them for, can you give me some applications of ropes? Elevator, सर बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं. किस चीज के लिए? बाइंडिंग के लिए What is binding? सर मतलब वो कुछ मटेरियल्स को जिस तरह पैकिंग के लिए यू कैन से. पैकिंग के लिए. अच्छा, यू मीन. अच्छा, और कौन से एप्लीकेशंस हैं? एलिवेटर में सर, जी, एलिवेटर में। एलिवेटर. गुड. सो अगर आप एलिवेटर को देखें तो देयर विल बी 3 or 4 or 5 or 6 ropes या many ropes in there. ठीक है जी. So basically we use this for lifting. ठीक है जी. और कौन से हैं? टोइंग के लिए भी आपने देखा होगा गाड़ियों में, मतलब यू टो कार्स विद. सर स्विंग्स के लिए भी होता है. जी, स्विंग्स ये झूले जो होते हैं बिल्कुल, झूले अक्सर के ये लिए भी पार्स होता वगैरह है. स्विंग्स. पार्स वगैरह में यूज. ठीक है जी, स्विंग्स में आप इस्तेमाल करते हैं. You use it for haulage, you use it for cranes में आप इस्तेमाल करते हैं, and so on. ठीक है जी. तो इन सब चीज़ों में, माइंस में आप इस्तेमाल करते हैं. माइंस से जब आप मिनरल्स निकालते हैं उसमें आप इस्तेमाल करते हैं. तो एनीवेज आपके रोप्स जो है ना, जितना आपका रोप जो है उसमें नंबर ऑफ वायर्स जो है ना, नंबर ऑफ वायर्स जितने ज्यादा होते हैं ना, तो उतना वो रोप जो है वो फ्लेक्सिबल होगा. ठीक है. और इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज अ 6x7, देन 6x9 स्टैंडर्ड हॉइस्टिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं. You use, देखें, if you look over here, this is a 6x37, so this is a special flexible one. 7x7 एयरक्राफ्ट में भी आप इस्तेमाल करते हैं रोप्स को, एंड सो ऑन. तो दिस टेबल गिव्स यू द वेट पर फुट. ठीक है जी. ये अगर आप देखें तो दिस गिव्स यू द वेट पर फुट ऑफ दिस रोप. Similarly, the minimum shoe diameter that you would use, the drum diameter that you would use in this column, the standard sizes that are available, it gives you the range in which these are available. Similarly, the material for this type of ropes, these are steels. So um, monitor steel, plow steel, mild plow steel, and so on. These are just the standard steels. अगर आप यहाँ पे देखें तो it gives you the diameter, the size of the outer wires. ठीक है जी. This column, and the modulus of elasticity and the strength of the rope in kpsi. So ये जो आपके ropes हैं, these are standard. Now one more thing, wire rope. सर जी,
सर ये शिव डायमीटर वो ऊपर जो डाया हो वही उसी के कहते हैं। Yes, it's the diameter of the drum, huh? You either call it शिव or drum, or पुली को भी हम शिव शिव कह रहे थे, अगर आपको याद। सर इसमें कुछ मतलब इनर डाया होगा और कुछ आउटर, मतलब जहाँ पे वायर, मतलब इसकी कुछ सरफेस निकली भी होती है ना सर, ये ड्रम टाइप की। तो Yes, ये जो but that is डायमीटर not है ये that इनर is है या जो आउट? no, that is not included. आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, and you say the rope is going to sit over here, एग्जैक्टली then this is एग्जैक्टली, यस यस, effectively diameter तो आपका ये है ना, ठीक है। यहाँ तक ओके यार। अच्छा नाउ थैंक यू। लेकिन इस किस्म में जब हम रोप इस्तेमाल करते हैं, इफ यू हैव सीन इट, इट्स अ वेरी यू नो द ड्रम इज नॉट दिस काइंड ऑफ ड्रम. Sometimes you have to wrap the pulley or the rope around it. तो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यू यूज रोप्स टू, ठीक है जी। तो एनीवेज, अगर आप बेंडिंग में देखें तो वायर रोप्स टेंशन गिविंग सेम टेंसाइल स्ट्रेस एज शू बेंडिंग इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बेंडिंग लोड, हम उसको कहते हैं। और वो इक्विवेलेंट बेंडिंग लोड जो है, दैट इज इक्वल टू एफ बी इक्वल टू बेसिकली सिग्मा इज इक्वल टू एफ बी ओवर ए एम. नाउ इफ यू लुक ओवर हियर, व्हाट इज दिस ए एम? ये ए एम क्या होगा? ठीक है, ये इसको हमने जो कह रहे हैं कि बेंडिंग फोर्स, इक्विवेलेंट बेंडिंग लोड हम कह रहे हैं, लेकिन ये ए एम जो है ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम, अगर हम रोप को देखें, ठीक है जी, तो रोप जो है दैट इज मेड इन सच अ वे दैट देयर आर वायर्स इन देयर, ठीक है जी। नाउ इज दिस इक्विवेलेंट? अगर इस रोप को मैं देखूं तो can I find out the area of this? What will be the area of this if this is spread in a diameter d, मैं कह देता हूँ, let's say Addition of all. ये आपका जो डायामीटर है, दिस इज योर डी,